Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. Hello everyone, how are you all? I hope you are all good. So students, in this video we will be discussing important current affairs for 16th of October. The session will be quite interesting and important, so stay tuned with us till the end. In this video students, we are talking about Government of India that has extended the 16th Finance Commission tenure till 30th of November. Then Dr. Mansukh Mandviya chaired the 238th meeting of the CBT of EPF in New Delhi. Then Ministry of Mines classified limestone as a major mineral to boost the ease of doing business and rural income. Also, Indian Air Force and UK's CSG has conducted a joint aerial exercise over the Indian Ocean. All these things and many more will be discussed here students, so stay tuned with us till the end. Let's start with national affairs. Government of India extended the 16th Finance Commission tenure till 30th of November 2025. Earlier, what was the deadline? Earlier it was 31st of October. Now it has been extended till 30th of November. Correct? The 16th Finance Commission, when was it constituted? It was constituted on 31st of December in 2023. Who is the chairman here for the 16th Finance Commission? Dr. Arvind Pangaria is the chairman here. And why was it constituted? What was the aim? What was the purpose here? To recommend the center state tax sharing for 2026 to 2031. Take a note of this. What will be the time period that will be covered here? It is from 1st of April 2026 to 31st of March 2031. Right, and this finance commission, it will address the recommendation for this particular time period. There are 4 members assisted by the secretary here, 2 joint secretaries and 1 economic advisors. Right, here you can see full-time members and part-time members associated here. And here remember Arvind Pangaria, he is the former vice chairman of Niti Aayog and he is the here chairman for the 16th Finance Commission. Correct. Here, if we see some of the recommendations made by 16th Finance Commission, it is for the distribution of taxes, right? Then grant in aids, also supporting the local bodies. Correct? When was the first Finance Commission established? It was in 1951. The Finance Commission, they are established for a period of 5 years. Correct? It comprises of a chairman and 4 other members. Next is Dr. Mansukh Mandviya has chaired the 238th meeting of the CBT of the EBF. What is CBT? Central Board of Trustees. EPF, it is your Employees Provident Fund. So Dr. Mansukh Mandviya, he chaired the 238th meeting of the Central Board of Trustees for EPF in New Delhi. Here, what was the aim? Correct? So this meeting undertook major decisions that included the simplification of the EPF partial withdrawal provisions and also the launch of Vishwas scheme. Correct. Let's discuss them. First is simplification of EPF partial withdrawal rules. Here CBT has approved the consolidation of 13 partial withdrawal provisions into 3 streamlined categories, that is essential needs for illness, education and marriage, housing needs and special circumstances. As per the new rules, members will now be able to withdraw maximum 100% of the eligible balance, that is 75% of in the Provident Fund, including the share of the employee and employer. The CBT increased EPF withdrawal allowances, permitting 10 education and 5 marriage withdrawals up to from the previous combined limit of 3. That means now 15 times you will be able to withdraw. That was earlier allowed to only 3 times. The next is your Vishwas scheme. Here EPFO has launched this Vishwas scheme to resolve long-standing disputes over the delayed Provident Fund payments. Correct? So it is Vishwas scheme that has been launched. Then EPFO 3.0 framework has been launched. This is a comprehensive member-centric digital transformation framework which aims to modernize the Provident Fund services. So these are few initiatives that you need to remember here. Right? Next is Ministry of Mines. They have classified limestone as a major mineral to boost the ease of doing business and rural income. See, major mineral, why? Because today's world we are seeing that critical minerals, right, these are rare earth minerals, they are very important for economic development.
right? And even rare minerals, they are not mined in India, they are not extracted in India, hence China is exporting them to us on a condition that we will not further export it to USA. But coming back, so recently limestone, it has been declared as a or reclassified as a major mineral by removing the end use restriction and issued a notification here to ensure smooth transition of existing minor mineral limestones leases to major mineral leases, right? Earlier limestone was categorized as a minor mineral when used in kilns for manufacturing limes and as a building material, but now it has been transitioned to major mineral. Correct, take a note of this. Also, the Ministry of Mine, they have exempted the leaseholders from submitting the digital area images of mining areas and online self-assessment reports until 1st of July 2027. So here you can see it is Ministry of Mines. They classified limestone as a major mineral by removing the end use restriction and issued a notification under section 20A of the Mines and Minerals Development and Regulation Act of 1957 to ensure a smooth transition of existing minor mineral limestone leases to major mineral leases. Correct. Next, here you can see some key exemptions that are important here that we just saw, that you don't have to submit the filing of the digital and aerial and online self-assessment images. You have to fill that by 1st of July 2027, and no penalty for non-filing of monthly annual returns till 31st of March 2026. Next is Indian Air Force and UK's CSG, that is your Carrier Strike Group. They have conducted a joint aerial exercise over the Indian Ocean, right? And this exercise followed the successful bilateral phase of Konkan exercise. So recently the aerial exercise between Indian Air Force and UK's Carrier Strike Group was held recently. From India, it is Sukhoi 30 Mark 1 fighter jets. Here you must see Sukhoi 30 Mark 1 fighter jets, Jaguar fighter jets, AWACS, right? They took part in. And from UK, it is F-35B from HMS Prince of Wales took part in this exercise. Next is Union Minister of State Arjun Ram Meghwal has launched LIMBS live dashboard for transparent government litigation. I repeat, recently Arjun Ram Meghwal has inaugurated the live cases dashboard of the Legal Information Management and Briefing System, that is LIMS, in Shastri Bhavan in New Delhi. Right? This will enhance transparency, accountability, efficiency in the government litigation management. Right? It will present a real-time data visualization of court cases and provide an overview of upcoming hearing cases. Correct? Take a note of it. Next is Ministry of Labour and Employment. They have recently partnered with Zomato to boost the employment and strengthen the gig economy. If you remember, a few times back, it was with Zepto also. Partnership was done in order to enhance the employment, and now we can see it is Ministry of Labour and Employment. They have partnered with Zomato, as Zomato can provide a lot of job opportunity to the gig workers, the delivery agents, right? So this MOU has been signed here, correct, to provide the job opportunities, to provide employment. Next is International Affairs students. India elected for the 7th time to the UNHRC, that is your United Nations Human Rights Council. India received 177 votes out of 188 votes, and this is for 2026 to 2028 term, right? Take a note of this, and this is the 7th tenure on the Council of India. I repeat, India elected unopposed to the UNHRC, right? Where was this held? The United Nations General Assembly was held in New York, USA. And here is the term member, and these are the recently elected members, and we have been re-elected here. Next is INS Shadri. It participated in the inaugural exercise of the IN Rokan bilateral naval exercise, right? So it is INS Shahadri that took part in Indian Navy Republic of Korea bilateral exercise that was held in Busan, South Korea. So question can be asked, the first ever edition or the bilateral, the first inaugural edition of the Indian Navy and Republic of Korean Navy bilateral naval exercise that was held in Busan, South Korea. What is the name of that Indian naval ship that took part in this? So it is INS Shahadri that took part in this. Next students, it is NIPL, that is NPCI International Payments Limited, that is the international arm of NPCI. They have recently signed a memorandum of understanding with Japan's NTT to enable UPI acceptance across the merchant locations in Japan. So across the merchant location, to enhance the use of UPI, this partnership has been done by NIPL with NTT Data of Japan. So now in Japan also we will be able to see that UPI will be used.
Next, IMF, that is International Monetary Fund, headquartered in Washington DC, right? They have recently raised the India's FY26 growth forecast to 6.6%, citing strong Q1 momentum. See, India is the world's fastest growing economy, and even after so many tariffs imposed on India by USA, right? Still, we are seeing that the market sentiments, they have not withered down, right? And it shows that India is a very strong market. India has very good base, right? And we have a very high potential of growth. So similarly here it is IMF, they projected in their World Economic Outlook report and projected that India will be growing by 6.6% in FY26 and 6.2% in FY27. India's inflation in FY26 2.8, in FY27 4%, global growth in 2025 3.2, in 2026 3.1, global inflation if we talk about this year in 2025 4.2%, and next year 3.7% as projected. And if we talk about IMF, who is the managing director of IMF, Kristalina Georgieva. Next is awards and recognition, students. Bharat Thimeni became the first Indian to climb 9 peaks above 8,000 meter. Take a note of this, right? He became the first India to climb the 9 peaks that are above 8,000 meter. Take a note of this, important, and can be asked. The name of person individual can be asked. Moving on, Tarun Garg has been appointed as the Managing Director and Chief Executive Officer of Hyundai India. As you can see him in the picture here, he will be succeeding Unso Kim. He will be succeeding whom? Unso Kim, right? And he has been the MD and CEO of Hyundai India lately. Next is FICCI. FICCI has appointed Anant Gonka as the President-elect for 25-26, right? So who has been appointed as the President-elect for FICCI for 25-26? Anant Goenka, right? And he will be succeeding Harshvardhan Agrawal. Next is sports. Overview of the IWF World Weightlifting Championship that was held in Ford, Norway. Right, if we talk about this event was held from 2nd to 11th of October. IWF and NWF was the organizer here. Total of 477 competitors from 87 countries took part in this event, right? And Mirabai Channu set national record and by winning silver in the women's category, that is for 48 kg category. Here you can see the medal tally. North Korea first, second Thailand, third China, fourth Armenia, fifth USA, and India was on the 20th position with a total of 3 medals. Next is obituary, students. Goa Agriculture Minister and former Chief Minister Ravi Naik has recently passed away. As you can see him in the picture, he passed away in Ponda, Gujarat. And if we talk about him, his political career started in 1980, right? Then he was elected as a member of Legislative Assembly 7 times. Also, in first time, also remember he was associated with BJP, right, in 2022 Goa Legislative Assembly elections. Next is former Kenya Prime Minister Raila Amolo Odinga has passed away. As you can see him in the picture at the age of 80 in Kerala. Correct? He was a veteran politician, democracy activist, and one of the most influential leaders in Kenya's post-independence political history. He passed away and he was the PM there from 2008 to 2030. Next is books and authors. Our Union Minister Rajnath Singh, that is our Defense Minister, has recently released a book that is Ready, Relevant and Resurgent 2, Shaping a Future Ready Force. This is the book that has been recently released. It was written by the CDS General Anil Chauhan and the book will be published by Pentagon Press. Next is important is International Day of Rural Women observed on 15th of October, and this day is observed to honor the contribution of rural and indigenous women to agriculture, food security and rural development, right? It is promoted by UN Women. There is a theme here, students. Theme being the rise of rural women building resilient futures with Beijing +30. Correct? And first time this day was observed in 2008. Next is state news. Google, they have partnered with Airtel and Adani for a $15 billion AI data hub in Andhra Pradesh. We discussed this yesterday. This will be a 1 gigawatt of data center, students, that will be built in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, and it is Google. They have partnered with Airtel and Adani to make this one of the Asia's largest data center that will be of 1 gigawatt, and $15 billion will be invested here. Where it will be established? It will be in
Visakhapatnam, Andhra Pradesh. It will be built over the next 5 years by 2026 to 2030, and green energy will be utilized here. That means it will be running on clean fuel. Right, students, so that's all for the day. Now let's move to the revision part that will be quite beneficial for you all. Pick out the correct statement regarding India's Sample Registration System Bulletin 2023 released by the Office of the Registrar General and Census Commissioner of India in September. If we look at the option here, all these three options are rightly mentioned. Next, identify the Indian state that has the largest outstanding credit portfolio for the small businesses at 6 lakh crore rupees as per the joint report Small Business and Spotlight released by SIDBI and Credit Bureau CRIF High Mark in September 2025. So identify that Indian state that has the largest outstanding credit portfolio for the small businesses at 6 lakh crore rupees. So which is that state? It is Maharashtra state. Right? Take a note of it. And UP has registered the highest outstanding portfolio growth of 20.7% on year basis for the portfolios. Next, according to the National Statistics Office monthly bulletin of the periodic labor force survey for August released in September, what was the national unemployment rate for the individuals aged 15 years and above in August? So the unemployment rate here was 5.1%. Next, what is the rank of India in the 18th edition of the Global Innovation Index, that is Innovation at a Crossroads, released by World Intellectual Property Organization, that is WIPO, so released by WIPO. This is the 18th edition of the Global Innovation Index. What is the rank of India in this Global Innovation Index? India stands at 38th position, and it is Switzerland that secured the first position in this Global Innovation Index. Next, by which year can artificial intelligence increase global trade by nearly 40% according to the World Trade Report titled Making Trade and AI Work Together to the Benefit of All. This is released by World Trade Organization in September 2025. So by which year AI can increase the global trade by nearly 40%? So it is by 2040. Next, which of the following is not among the top 5 Indian states with the highest number of millionaire households in 2025 according to the Mercedes-Benz Huron India Wealth Report and Luxury Consumer Survey 2025 released by Huron India in September. So which of the following is not among the top 5 Indian states? It is West Bengal that is not among the top 5 here. If we look at the top 5, it is Maharashtra, then Delhi, then Tamil Nadu, then it is Karnataka and Gujarat on the 5th position. Right? Next, mark the correct statement regarding the report, that is State Finances 22-23, a decadal analysis released by the Comptroller and Auditor General of India. If we look at the option here, we have to find the correct statement. So option B is rightly mentioned here. It is saying option A, Andhra Pradesh recorded the highest revenue surplus. No, it is UP that recorded the highest revenue surplus, and it is not Uttar Pradesh that recorded the largest revenue deficit. It is Andhra Pradesh that recorded the largest revenue deficit. Now all these three options are rightly mentioned. Next, mention the organization which predicted India's GDP growth forecast by 40 basis point to 6.7% for FY26 in their interim report, and this is the report mentioned here. Which is that organization? It is OECD, Organization for Economic Cooperation and Development. Next, in September, the Ministry of Statistics and Program Implementation has released the 4th edition of the Children in India 2025. It was during the 29th edition of the Conference of Central and State Statistical Organization in Chandigarh. Question is, identify the correct statement among the following. If we see here, option C is rightly mentioned here. If we look at option A and B, A is saying that India's infant mortality rate decreased from 44 deaths per 1000 live births to in 2011 to just 35 in 2023. So it is not 35 but 25 in 2023. Now option A is right. B is saying India's under 5 mortality rate was estimated at 20 in 2023 compared to 30 in 2022. So it is estimated at 29 in 2023 compared to 30 in 2022. Now option B is also right and C was already right. Next, which organization released the 8th edition of the Environmental Accounts Report titled Environment Accounting
on Forest 2025 during the 29th Central Conference and State Statistical Organization held in Chandigarh. So which organization released the 8th edition here? It was released by the Ministry of Statistics and Program Implementation. Right? Next, one more thing here, remember, it is Kerala state where we saw the highest increase of forest cover. Right? Highest increase. Next, so students, these were some your index. Now let's move to the defense related questions. First is, mention the place where the 14th exercise of exercise Maitri, that is a joint annual military exercise, was held between Indian Army and Royal Thai Army that took place in September 2025. So among the following, it is Umroi, Meghalaya. This is the location where we saw the 14th edition of the exercise Maitri that took place. Next, in August, which system developed by the High Energy Materials Research Laboratory of DRDO for Kalvari class submarines of Indian Navy was held over to Rear Admiral Rupak Barau to strengthen India's underwater warfare capabilities? So, which system developed by the High Energy Material Research Laboratory? What is the name of that system? It is your Naval Flare System. Important, take a note of it. Next is, mention the company that secured defense and technology orders worth 644 crore rupees across areas such as data centers, ship fire control systems, tank navigation systems, communication equipments and electronic voting machines. So mention that company. It is Bharat Electronics Limited. Next, mention the name of the joint military exercise held between the armies of India and USA. The exercise was held where? In Alaska in USA. What is the name of that exercise? It is Yudh Abhyas. Exercise is Yudh Abhyas. And one more thing, this is the 21st edition of this exercise Yudh Abhyas. Next, mention that company that built the 11th ammunition cum torpedo cum missile barge, large sized ammunition missile barge launched by the Indian Navy in Thane, Maharashtra. So mention that company. It is Suryadipta Projects Private Limited. Take a note of it. Next is, what is the estimated revenue of the revenue procurements for 25-26 as per the Defence Procurement Manual approved by the Ministry of Defence in September to improve the procurement process and operational readiness of the armed forces? It is 1 lakh crore rupees, right? This is the estimated revenue of the revenue procurements for FY26. Next, where did the Indian Navy commission their new naval-based facility named Indian Naval Ship Aravali in the ceremony held in September? If we look at the options here, it is Gurugram, Haryana, right? This is the location where INS Aravali was commissioned. Next, mention the company that built Androth, that is the second of the 8th anti-submarine warfare shallow watercraft received by the Indian Navy in September. Which is that company that developed this Androth? It is Garden Reach Shipbuilders and Engineers Limited. And headquarter of this is in Kolkata, West Bengal. Also, Kolkata is termed as the safest city in India. And which is the most unsafe city of India? It is Kochi. Kochi is in Kerala. Next, students, is our homework section. First question, world's first malaria drug. World's first malaria drug for infants was launched by which country, and the name of the drug also. Second question, which country has adopted Euro recently and it became the 21st member of the Eurozone? Name that country. Third question, recently tell me what is the rank of NSE in terms of IPO fundraising globally. What is the rank of NSE globally? Fourth question, tell me recently who has been appointed as the executive director of COAI. What is the COAI? Give me the full form, and who has been appointed as the chairperson here, right? Or he has been reappointed as the chairperson here. I repeat. First, tell me who has been appointed as the executive director of Federal Bank. I have mixed two questions. Executive director of Federal Bank. Then for fifth question, what is COAI and who has been reappointed as the chairperson of COAI? This is your fifth question.
So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में 16 अक्टूबर के हम इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 16th फाइनेंस कमीशन टेन्योर के बारे में। देन हम बात करेंगे डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने चेयर की 238 मीटिंग ऑफ द सीबीटी ऑफ द एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड। देन मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने क्लासीफाई किया लाइमस्टोन को एज अ मेजर मिनरल, जो कि पहले माइनर मिनरल होता था। देन इंडियन एयरफोर्स एंड यूके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के द्वारा भी एक जॉइंट एरियल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई ओवर इंडियन ओशन। ये फर्स्ट एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का, मतलब इनॉग्रल एडिशन है। इसको डिस्कस करेंगे। तो ये काफी सारी न्यूज रहेंगी स्टूडेंट्स आज की वीडियो में, सो स्टे ट्यून्ड विद अस टिल द एंड। Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code VIKAS10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. स्टार्ट करते हैं नेशनल अफेयर्स से स्टूडेंट्स। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड कर दिया 16th फाइनेंस कमीशन टेन्योर को 30 नवंबर 2025 तक। पहले कब तक था? ये 31 अक्टूबर था, जो कि एक्सटेंड करके अब 30 नवंबर 2025 कर दिया गया है। ये आपका 16th फाइनेंस कमीशन है, राइट। इसके चेयरमैन कौन रहेंगे? डॉक्टर अरविंद पंगरिया यहाँ के चेयरमैन रहेंगे। एंड इसको सेंटर स्टेट का जो टैक्स शेयरिंग रहेगा 2026 से 2031 के लिए, उसके लिए इसको सेटअप किया गया था। फाइनेंस कमीशन जनरली 5 साल के लिए स्टैब्लिश की जाती है। पहली जो फाइनेंस कमीशन स्टैब्लिश की थी 1951 में स्टैब्लिश की गई थी, राइट। एंड यहीं पे आप देख सकते हैं कुछ यहाँ पे चेयरमैन अरविंद पंगरिया रहेंगे, जो कि फॉर्मर नीति आयोग के चेयरमैन रह चुके हैं। एंड 4 मेंबर यहाँ पे होते हैं इनके साथ, ठीक है, टेक अ नोट। फिर आ जाते हैं स्टूडेंट्स डॉक्टर मनसुख मांडविया, इन्होंने चेयर किया 238 मीटिंग ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ द एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड इन न्यू दिल्ली। कुछ रूल्स यहाँ पर आए हैं स्टूडेंट्स, कुछ चीज़ें लॉन्च की गई हैं। जैसे पहला की अप्रूवल है सिंप्लीफिकेशन ऑफ द ईपीएफ पार्शियल विड्रॉल रूल्स। पहले 3 बार आप यहाँ पे विड्रॉल अलाउ किया जाता था, लेकिन अब उनको 13 बार कर दिया गया है, राइट। पहले तो बेसिकली 13 पार्शियल विड्रॉल्स यहाँ पे 3 कैटेगरीज में, जैसे आपके इलनेस के लिए जो एसेंशियल नीड्स हैं, एजुकेशन मैरिज के लिए पैसा निकाल सकते हैं, हाउसिंग नीड्स के लिए, स्पेशल सर्कमस्टांसेस के लिए, राइट। एंड मैक्सिमम 75% निकाल सकते हैं ऑफ द प्रोविडेंट फंड, जिसमें से आपका जो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों का जो शेयर है वो आप यहाँ पे निकाल पाएंगे, राइट। जो ये इंक्रीज किया गया है ईपीएफ का, आप देख सकते हैं विड्रॉल अलाउंसेस परमिटिंग 10 एजुकेशन एंड 5 मैरिजेस विड्रॉल्स अप फ्रॉम द प्रीवियस कंबाइंड लिमिट ऑफ 3, राइट। इनके पहले 3 टाइम निकाल सकते थे इनके अंदर, लेकिन अब आप 15 बार निकाल सकते हैं, 10 बार एजुकेशन के लिए एंड 5 बार मैरिज विड्रॉल्स के लिए, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। फिर इसी के अलावा ही एक विश्वास स्कीम भी लॉन्च की गई है ईपीएफओ के द्वारा। ये क्या है कि जो लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट्स हैं, राइट, डिलेड पीएफ पेमेंट्स के लिए, उनको रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पे ये विश्वास स्कीम लॉन्च की गई। मूविंग ऑन, एक और चीज़, ईपीएफओ 3.0 फ्रेमवर्क लॉन्च किया गया। ये बेसिकली ईपीएफओ 3.0 फ्रेमवर्क रहेगा, जिससे आपका बेटर एक एनहेंस्ड कॉम्प्रिहेंसिव मेंबरशिप सेंट्रिक डिजिटल प्लेटफॉर्म रहेगा, जिसका एम रहेगा कि जो पीएफ की, प्रोविडेंट फंड की जो सर्विसेज हैं, हम उनको और बेटर कर सकें। नेक्स्ट है फिर स्टूडेंट्स मिनिस्ट्री ऑफ माइंस, इन्होंने लाइमस्टोन को एज अ मेजर मिनरल डिक्लेयर कर दिया है। इससे पहले ये एक माइनर मिनरल बोला जाता था, लेकिन अब इसको मेजर मिनरल डिक्लेयर कर दिया गया, जिससे जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है वो बढ़ता हुआ दिखेगा, रूरल इनकम फ्लरिश होती हुई हमारी दिखेगी। इसके अंदर 2 इंपॉर्टेंट चीज़ की गई हैं, वो क्या है कि पहला की जो फाइलिंग डिजिटल एरियल इमेजेस एंड ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट 1 जुलाई 2027 तक उन माइंस की एरियल इमेजेस एंड ऑनलाइन सेल्फ असेसमेंट करना है आपको 1 जुलाई 2027 तक। एंड कोई पेनल्टी नहीं रहेगी फॉर नॉन फाइलिंग ऑफ मंथली एंड एनुअल रिटर्न टिल 31 मार्च 2026 तक, ठीक है, ये मार्क करके चलेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स एंड यूके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, इनके द्वारा एक जॉइंट एरियल एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई इंडियन ओशन के ऊपर, राइट। एंड ये आपका कोंकण एक्सरसाइज हुई थी अभी इनके बीच में, उसके बाद ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट कराई जा रही है इंडियन नेवी एंड यूके के कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के साथ। तो पूछा जा सकता है ये इंडिया की तरफ से हम देखें तो सुकोई 30 मार्क 1, जैगुआर, AWCS, इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला। यूके की तरफ से देखें तो F-35B फ्रॉम HMS प्रिंस ऑफ वेल्स के द्वारा ये पार्टिसिपेशन देखने को मिला।
फिर आ जाते हैं यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट अर्जुन राम मेघवाल जी, इन्होंने लॉन्च किया लिम्स लाइफ डैशबोर्ड को फॉर ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट लिटिगेशन। लिम्स क्या है? लीगल इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट एंड ब्रीफिंग सिस्टम, इन शास्त्री भवन इसको लॉन्च किया गया। ये बेसिकली जो लाइव केसेस हैं, राइट, उसका एक डैशबोर्ड बनाने का काम करेगा। आने वाले टाइम पे कौन कौन से केसेस आने वाले हैं उसको दिखाएगा, राइट, प्रॉपर एक डैशबोर्ड दिखाएगा, रियल टाइम विजुअलाइजेशन रहेगा कोर्ट केसेस का एंड अपकमिंग हियरिंग केसेस का, एक प्रॉपर डैशबोर्ड बन जाएगा, राइट, कि आपकी डेट सो एंड सो डेट पे है, अब नेक्स्ट डे पे ये केसेस हैं, उसके बाद ये केसेस हैं, इन केसेस का क्या रेजोल्यूशन हुआ है, तो ये एक प्रॉपर डैशबोर्ड यहाँ पे बना के देगा लिम्स। नेक्स्ट, फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने अभी जोमेटो के साथ पार्टनर किया ताकि एम्प्लॉयमेंट को बूस्ट किया जा सके एंड गिग इकोनॉमी को स्ट्रेंथन किया जा सके। देखो, अगर आपको याद हो, थोड़े टाइम पहले जेप्टो के साथ भी सेम पार्टनरशिप की गई थी। रीजन बीइंग कि ये गिग इकोनॉमी, जो ड्राइवर्स हैं, गिग इकोनॉमी है, ये काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं यूथ को। सिमिलरली जोमेटो के राइडर्स होते हैं, तो जोमेटो भी काफ़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है, राइट। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने जोमेटो के साथ पार्टनर किया ताकि जो एम्प्लॉयमेंट है उसको बढ़ावा दिया जा सके एंड बेटर गिग वर्कर्स को और जॉब अपॉर्चुनिटीज और लोगों को यहाँ पे इस सेक्टर में लाया जा सके। नेक्स्ट इज इंटरनेशनल अफेयर्स स्टूडेंट्स। फिर इंडिया को इलेक्ट किया गया फॉर द 7th टाइम अंडर द UNHRC 2026 से 28 टर्म के लिए। UNHRC क्या है? यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के अंडर यहाँ पे इंडिया को इलेक्ट कर लिया गया है, राइट। एंड इंडिया की अगर यहाँ पे हम बात करें तो 177 वोट्स मिले इंडिया को आउट ऑफ 188 टोटल वोट्स में से, राइट। एंड यहाँ पे टर्म क्या रहेगा? 1 जनवरी 2026 से लेके 31 दिसंबर 2028 तक ये इंडिया का 7वां टेन्योर रहने वाला है, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। मूविंग ऑन, फिर आ जाते हैं, अभी इंडिया ने पार्टिसिपेट किया, फिर इंडियन नेवी ने रॉयल रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी के साथ पार्टिसिपेट किया एक बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज में। ये इनॉग्रल एडिशन है, मतलब पहला एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का, जो कि इंडियन नेवी एंड रॉयल नेवी ऑफ या फिर रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी के साथ पार्टिसिपेट हुआ, राइट। तो यहाँ पे इंडिया की तरफ से INS शाहदरी का हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। टेक अ नोट ऑफ दिस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि जो अभी एक्सरसाइज हुई थी इंडिया एंड इंडियन नेवी एंड रिपब्लिक ऑफ कोरिया की नेवी के बीच में, उसमें किसका पार्टिसिपेशन हमें देखने को मिला था? तो उसमें इंडिया की तरफ से INS शाहदरी का हमें पार्टिसिपेशन देखने को मिला था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट्स, NIPL ये क्या है? इंटरनेशनल आर्म है NPCI का, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। तो इन्होंने एंटिटी डाटा के साथ पार्टनर किया ऑफ जापान ताकि वहाँ पे UPI एक्सेप्टेशन को प्रमोट किया जा सके। मतलब जापान में भी हम देखेंगे कि UPI को एक्सेप्ट करा जाएगा एट वेरियस मर्चेंट लोकेशंस। नेक्स्ट, फिर आ जाते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्होंने रेज किया इंडिया की FY26 ग्रोथ फॉरकास्ट को टू 6.6%। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिलेगा फर्स्ट क्वार्टर में। एंड इंडिया स्टिल हम देख सकते हैं इंडिया वर्ल्ड की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में से आता है। इवन जब हमने देखा US ने इतनी सारी पेनल्टीज, इतने सारे टैरिफ्स इंडिया पे इम्पोज किए, उसके बाद भी हमारी जो ग्रोथ रेट है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ये दिखाता है कि इंडिया काफ़ी रॉबस्ट इकोनॉमी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है। एंड ये हेडविंड्स के से हमारे देश को कुछ नहीं होने वाला, बट हम फ्यूचर में भी देखेंगे इंडिया बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सामने निकल के आने वाला है। इसी के साथ साथ अगर हम इंडिया की इन्फ्लेशन देखें, FY26 2.8, FY27 4%, ग्लोबल ग्रोथ 3.2% 2025 की, 2026 की 3.1%, ग्लोबल इन्फ्लेशन 2025 में 4.2, 2026 में 3.7%। मूविंग ऑन, भारत थिमेई ये फर्स्ट इंडियन बन गया जिन्होंने 9 पीक्स पे क्लाइंब किया अबव 8000 मीटर। पहले इंडियन है, आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं तरुण गर्ग। इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहाँ का? हुंडई इंडिया का। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं। ये सक्सीड करेंगे उनसो किम को एंड 1 जनवरी 2026 से इनका टर्म स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद आ जाते हैं, फिक्की ने अपॉइंट किया अनंत गोयंका को एज द प्रेसिडेंट इलेक्ट फॉर 25-26 के लिए एंड ये हर्षवर्धन अग्रवाल को सक्सीड करेंगे। सिमिलरली नेक्स्ट है स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स, इंडियन IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन, राइट। इनकी वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप हमें देखने को मिली अभी फॉर्ड नॉर्वे में, राइट। 2 से 11 अक्टूबर तक ये हुई थी, या राइट। एंड IWF इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एंड नॉर्वेनियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराई गई थी। यहीं पे अगर हम देखें तो 2 से 11 अक्टूबर तक हुआ था। 477 कॉम्पिटिटर्स थे 87 कंट्रीज में से। एंड इंडिया से मीराबाई चन्नू ने नेशनल रिकॉर्ड सेट किया इन द वीमेंस 48 kg कैटेगरी एंड सिल्वर मेडल इनके द्वारा जीता गया। अगर मैं मेडल टैली में बात करूँ तो इंडिया 20th पोजीशन पे आता है मेडल टैली में। हमने सिर्फ 3 मेडल जीते, पहले पे नॉर्थ कोरिया, दूसरे पे थाईलैंड, देन चाइना, देन अर्मेनिया, देन USA एंड इंडिया 20th पोजीशन पे विद जस्ट 3 मेडल्स।
इसके बाद ऑबिटरी पे आते हैं स्टूडेंट्स। गोवा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रवि नायक जी, इनका रिसेंटली निधन हो गया 79 की एज में, पोंडा गोवा में। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, राइट। देन नेक्स्ट आ जाते हैं फॉर्मर कीनिया के प्राइम मिनिस्टर रायला अमोलो ओडिंगा। आप इनको पिक्चर में देख सकते हैं, इनका निधन हो गया। ये अभी केरला में थे, 80 की एज में इनका निधन हो गया है। आन 2008 से लेके 2013 तक ये यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं कीनिया के। नेक्स्ट बुक्स एंड ऑथर्स पे आते हैं स्टूडेंट्स। राजनाथ सिंह जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्होंने बुक रिलीज की रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग अ फ्यूचर रेडी फोर्स। ये CDS जनरल अनिल चौहान जी के द्वारा इस बुक को लिखा गया है, ऑथर किया गया है, एंड पेंटागन प्रेस के द्वारा इस बुक को पब्लिश करा जाएगा। मूविंग ऑन, नेक्स्ट आ जाते हैं फिर इंपॉर्टेंट डेज पे। इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वीमेन 15 अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। एज द नेम सजेस्ट, रूरल वीमेंस के बारे में अवेयरनेस क्रिएट कराने के लिए एंड जो चैलेंजेस एंड जो फूड सिक्योरिटी एंड रूरल डेवलपमेंट में जो इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको अवेयर कराने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। UN वीमेन के द्वारा हम इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। एंड थीम याद रखेंगे, द राइज ऑफ रूरल वीमेन बिल्डिंग रेजिलियंट फ्यूचर्स विद बीजिंग +30। पहली बार 15 अक्टूबर 2008 में इसको ऑब्जर्व करा गया। फिर आ जाते हैं स्टेट न्यूज़ के ऊपर। गूगल ने अभी पार्टनर किया, और हम ये कल डिस्कस कर चुके हैं। गूगल ने पार्टनर किया एयरटेल एंड अडानी के साथ, ताकि एक $15 बिलियन का एक डाटा AI डाटा हब बनाया जा सके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ये क्लीन एनर्जी के ऊपर रन करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़। एंड इसी के साथ साथ कहाँ पे रहेगा, ये 1 गीगावाट का डाटा सेंटर भी बना रहे हैं गूगल। कहाँ पर? विशाखापट्टनम में ही, जो एशिया का लार्जेस्ट रहने वाला है। तो मार्क दिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पे, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रांग होगी। इवन अभी हम देख रहे हैं नॉर्थ इंडिया में जो बोला जाता था पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा पॉल्यूशन कम होता हुआ दिख रहा है। तो जो एवरेज हेल्थ एक्सपेक्टेंसी है वो रिड्यूस हो गई है बाय 3.5 ईयर्स। नेक्स्ट, नीति आयोग का फ्रंटियर टेक हब, इनके द्वारा चौथा एडिशन रिलीज किया गया ऑफ देयर फ्लैगशिप रिपोर्ट, जो कि है फ्यूचर फ्रंट क्वार्टरली इनसाइट्स, राइट। ये रिपोर्ट वाज डेवलप्ड बाय FTH अलॉन्ग विद विच इंस्टीट्यूट? तो इस रिपोर्ट को डेवलप किया था अलॉन्ग विद IISc बेंगलुरु, राइट। एंड 2D मटेरियल्स के ऊपर जो यूसेज है, इनका यूज केसेस है, उसको हाईलाइट करने के लिए। एंड सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी के जगह जो नेक्स्ट चीज़ अब हमें देखने को मिलेगी वो है क्वांटम वर्ल्ड, राइट। क्वांटम टेक्नोलॉजीज, उसमें ये 2D मटेरियल्स यूज़ होते हुए दिखेंगे। एंड इनका यूज़ इन द क्वांटम टेक्नोलॉजीज, ये यहाँ पे इसके बारे में अवेयरनेस ड्राइव करने के लिए ये रिपोर्ट रिलीज की गई। नेक्स्ट, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंडिया सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम बुलेटिन 23 रिलीज बाय द ऑफिस ऑफ द रजिस्ट्रार जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया इन सितंबर। अगर यहाँ पे हम देखें तो तीनों ऑप्शन बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इंडियन स्टेट दैट इज द लार्जेस्ट आउटस्टैंडिंग क्रेडिट पोर्टफोलियो फॉर स्मॉल बिजनेसेस एट 6 लाख करोड़ रुपीस। सिडबी के द्वारा ये रिपोर्ट रिलीज की गई थी। तो क्रेडिट पोर्टफोलियो सबसे हाईएस्ट हमें महाराष्ट्र का देखने को मिलता है। लेकिन यहीं पे एक और चीज़ याद रखेंगे, जो क्रेडिट पोर्टफोलियो में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिली है वो सबसे ज़्यादा यूपी में हमें देखने को मिली है। 20% की, ऑलमोस्ट 20.7% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हमें यहाँ पे देखने को मिली है यूपी में। नेक्स्ट, according to the National Statistics Office monthly bulletin of the periodic labor force survey for August released in September, what was the national unemployment rate for the individuals that are aged 15 years and above? तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना देखने को मिलता है? 5.1% का यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द 18th एडिशन ऑफ द ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स? तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स का ये 18th एडिशन था। पूछा जा रहा है इंडिया की क्या रैंक रहेगी इस ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में? तो इंडिया 38 पोजीशन पे स्टैंड करता है। ये ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स वीपो के द्वारा रिलीज किया गया था, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, एंड स्विट्जरलैंड ने यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन सिक्योर की। नेक्स्ट, किस साल तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो ग्लोबल ट्रेड है उसको नियरली 40% तक कर देगा एज पर द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट? मतलब 40% का इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो 2040 तक ये डाटा हमें देखने को मिलता है। इवन स्टूडेंट्स अगर हम देखें तो चाइना में तो अब रिमोटली ट्रेड को कैरी आउट करा जाता है। पोर्ट्स वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे ऑटोनोमस व्हीकल्स हैं जो आपके कंटेनर्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। रोबोट्स वहाँ पे काम कर रहे हैं। उन पोर्ट्स को ऑटोनोमस बनाया जा रहा है ताकि एफिशिएंसी इंक्रीज की जा सके। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द टॉप 5 इंडियन स्टेट्स विद द हाइएस्ट नंबर ऑफ मिलियनर हाउसहोल्ड्स इन 2025 अकॉर्डिंग टू द मर्सिडीज बेंज ह्यूरन इंडिया वेल्थ रिपोर्ट एंड लग्जरी कंज्यूमर सर्वे रिलीज्ड बाय द ह्यूरन इंडिया इन सितंबर?
तो इनमें से टॉप 5 इंडियन स्टेट में कौन सी नहीं आती है ये पूछा जा रहा है। तो टॉप 5 में अगर हम देखें तो वेस्ट बंगाल नहीं आती है। टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र, फिर महाराष्ट्र के बाद दिल्ली, फिर तमिलनाडु, देन कर्नाटका एंड आफ्टर कर्नाटका गुजरात। नेक्स्ट, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिपोर्ट जो कि है स्टेट फाइनेंसेस 22-23 अ डेकेडल एनालिसिस रिलीज्ड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया इन सितंबर। अगर यहाँ पे देखें करेक्ट स्टेटमेंट तो सिर्फ ऑप्शन बी हमारा ऑप्शन सही रहेगा, ए गलत है, सी गलत है। ए कह रहा है कि आंध्र प्रदेश रिकॉर्डेड द हाईएस्ट रेवेन्यू सरप्लस, तो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यूपी ने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट रेवेन्यू सरप्लस। वहीं पे फिर सी ऑप्शन कह रहा है कि यूपी ने रिकॉर्ड किया लार्जेस्ट रेवेन्यू डेफिसिट, तो नहीं, आंध्र प्रदेश ने रिकॉर्ड किया लार्जेस्ट रेवेन्यू डेफिसिट अमंग स्टेट्स। अब तीनों ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। नेक्स्ट, मेंशन दैट ऑर्गेनाइजेशन जिसने प्रेडिक्ट किया इंडिया की जीडीपी ग्रोथ फॉरकास्ट बाय 40 बेसिस पॉइंट से इंक्रीज कर दी टू 6.7%। तो ये OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इन्होंने रिलीज किया 4th एडिशन ऑफ चिल्ड्रन इन इंडिया 2025। इट वाज ड्यूरिंग द 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन इन चंडीगढ़। आइडेंटिफाई करो करेक्ट स्टेटमेंट को। अगर यहाँ पर हम देखें तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट रहेगी, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, ए गलत है, बी गलत है। ए कह रहा है कि इंडिया के जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है ये डिक्रीज कर गया फ्रॉम 44 डेथ्स पर 1000 लाइव बर्थ इन 2011 टू 35 इन 2023। तो नहीं, 35 नहीं, 25 इन 2023। वहीं पे अगर हम बात करें इंडिया के अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट की, तो जो 20 था 2023 में वो गिर के 30 हो गया, सॉरी जो 30 था 2022 में वो गिर के 20 हो गया 2023 में। तो नहीं, 20 नहीं हुआ, 29 हुआ है, एक का रिडक्शन हमें देखने को मिला है। तो अब ऑप्शन तीनों यहाँ पे आपके ABC सही रहेंगे। नेक्स्ट है, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया 8वां एडिशन ऑफ द इन्वायरमेंटल अकाउंट्स रिपोर्ट टाइटल्ड इन्वायरमेंट अकाउंटिंग ऑन फॉरेस्ट 2025 ड्यूरिंग द 29th कॉन्फ्रेंस ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन जो कि चंडीगढ़ में हुआ इन सितंबर 2025। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज किया 8वां एडिशन ऑफ द इन्वायरमेंटल अकाउंट्स रिपोर्ट? तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, इनके द्वारा ये 8वां एडिशन यहाँ पे रिलीज किया गया था। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट पे स्टूडेंट्स, मेंशन द प्लेस जहाँ पे 14th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज मैत्री हमें देखने को मिली जो कि इंडियन आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी के बीच में ये एक्सरसाइज हुई। तो ये उमरोई मेघालय में हमें ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी, राइट, 14th एडिशन ऑफ द एक्सरसाइज मैत्री। नेक्स्ट पे आते हैं, फिर अभी किस सिस्टम के द्वारा कौन सा सिस्टम डेवलप किया गया था बाय हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी के द्वारा ऑफ DRDO फॉर कलवारी क्लास सबमरीन, राइट, एंड इसको हैंड ओवर किया गया टू रियल एडमिरल रूपक बराउ टू स्ट्रेंथन इंडियाज अंडर वाटर वॉरफेयर कैपेबिलिटीज। तो बताइए कौन सा सिस्टम यहाँ पे डेवलप किया गया था? वो सिस्टम है आपका नेवल फ्लेयर सिस्टम, राइट। नेक्स्ट है, मेंशन दैट कंपनी जिन्होंने सिक्योर किया डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्डर्स वर्थ 644 करोड़ रुपीस अगस्त के महीने में फॉर एरियाज जैसे डाटा सेंटर्स, शिप फायर कंट्रोल सिस्टम्स के लिए, टैंक नेविगेशन सिस्टम्स के लिए, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जो कि EVM है उनके लिए। तो किस कंपनी ने सिक्योर किया है डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी ऑर्डर? ये किया गया बाय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BEL। Next, mention the name of the joint military aircraft exercise held between the armies of India and USA in Alaska. So mention the name of the joint military exercise. क्या नाम रहेगा उस एक्सरसाइज का, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज का? वो है युद्ध अभ्यास। इंपॉर्टेंट है, लोकेशन कहाँ रहेगी? अलास्का, USA में ये एक्सरसाइज देखने को मिली थी, राइट। एंड 21वां एडिशन यहाँ पर इस बार हमने देखा युद्ध अभ्यास का। नेक्स्ट, मेंशन दैट कंपनी दैट बिल्ड द 11th एम्यूनेशन कम टॉर्पिडो कम मिसाइल बार्ज लार्ज साइज एम्यूनेशन मिसाइल बार्ज, राइट, जो कि लॉन्च किया गया बाय द इंडियन नेवी इन थाने महाराष्ट्र। तो मेंशन दैट कंपनी, उस कंपनी का नाम बताओ। वो है सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। नेक्स्ट आ जाते हैं, व्हाट इज द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ द रेवेन्यू प्रोक्योरमेंट्स 25-26 के लिए एज अ पार्ट ऑफ द डिफेंस प्रोक्योरमेंट मैनुअल approved by the Ministry of Defence in September to improve procurement processes and operational readiness of the armed forces. So what is the estimated value of the revenue procurement here? तो 1 लाख करोड़ रुपीस। नेक्स्ट, कहाँ पर इंडियन नेवी ने कमीशन किया अपना नया नेवल बेस फैसिलिटी नेम्ड INS अरावली को?
तो ये अरावली क्या है, ये एक पहाड़ी की नाम है, पहाड़ का नाम है, राइट। ये गुरुग्राम हरियाणा से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे इसको कमीशन करा गया। Mention the amount of anchor equity investment announced by the International Finance Corporation (IFC), that is the world arm of World Bank Group, in H Dream Fund on 7th of August to promote green and affordable housing in India. So the amount here was $150 million. Next, which public sector bank in India has signed a memorandum of understanding with FSI to launch a customized web-based payment platform named FSI Payment Solution? It is Bank of Baroda. Next, mention the company that launched India's first passive flexi-cap fund in August, developed in partnership with National Stock Exchange, which combines quality stocks and dynamic market cap allocation based on the momentum. So, which is that? Mention that company. It is DSP Mutual Fund. Next, in August, RBI has imposed a monetary penalty of what amount on ICICI Bank Limited for breaching the regulatory guidelines. So, the penalty that was imposed was of 75 lakh rupees. Next, name the single window gateway proposed by SEBI in August to ease regulatory process for foreign portfolio investors. So, which is it? It is Swagat FI. FI is your foreign investors, right? And Swagat is SEBI single window automatic and generalized access for trusted foreign investors. Next, identify the first miscellaneous NBFC in India to surpass a business turnover of 1 lakh crore rupees in August 2025. It is your Kerala State Financial Enterprise. Next, in August, NABARD Dash and Aqua Exchange Agritech Private Limited has signed a memorandum of understanding aiming to integrate shrimp farmers into the formal credit system by offering low interest, collateral free crop loans, reducing the reliance on the formal lending. So, NABARD along with Kerala State Finance, along with Kerala, not Kerala, along with Andhra Pradesh Grameen Bank, right? I correct, along with Andhra Pradesh Grameen Bank and Aqua Exchange Agritech Private Limited, they have signed this MOU to integrate shrimp farmers into the formal credit system. And here loan disbursement of up to 25 crore rupees in collateral free loans will be disbursed to 100 shrimp farmers within 3 to 6 months with an initial sanction of 1.25 crore rupees to 5 farmers. Next, which bank entered into a strategic partnership with CAMSPay to launch a new digital payment gateway platform targeting Indian enterprises? It is RBL Bank. Next, in August, Paytm Payment Service Limited, they have received in principle approval from RBI to operate what under the Payments and Settlement Act of 2007. It was your what online payment aggregator. Next, RBI, they have allowed NRIs holding special rupee Vostro accounts to invest their surplus rupee balances in what? In government securities and treasury bills. Important news, take a note of this, and this has came into effect immediately. Next, mark the correct statement regarding the introduction of a circular of continuous clearing and settlement realization in CTS by RBI in August 2025. Right, so mark the correct statement. A is right, B is right here. Next, identify the company with which HDFC Ergo General Insurance Company Limited partnered in August to launch an affordable health insurance solution with an aim to expand health insurance coverage to the underserved citizens in India. It is your PhonePe. Next is name the insurance plan launched by SBI Life Insurance Company Limited in August that is designed for growing needs of the customers. It is SBI Life Smart Shield Plus. Then next is National Small Industries Corporation Limited. They have signed a memorandum of understanding with several private sector banks to streamline financing and support the growth of which sector? It is your for which sector? It is for MSME sector, micro, small and medium enterprise. Next is in August, which bank launched a special personal loan scheme for the Agniveers, providing a preferential banking services to the armed force personnel on the occasion of the 79th Independence Day. Which is that bank? It is your State Bank of India. Next, mention the country with whose capital markets regulators provided the license to Kotak Mahindra Limited, allowing the bank to sell investment funds and portfolios to onshore retail investors. It is UAE, United Arab Emirates. Next, you have to find the correct statement regarding the report on UPI transactions released by State Bank of India in August. If we look at the options here, option A is right and C is right, B is wrong. Next,
In collaboration with which payment cards entity did Bank of Maharashtra? They have launched a co-branded credit card to offer customers a premium and rewarding shopping experience across diverse segments. It is SBI cards. Next, in August, Exim Bank, that is Export and Import Bank of India, has signed a $40 million commercial credit line agreement with the Africa-based ECOWAS Bank for Investment Development to support the development projects across Asia. Next is mention the bank that became the first Indian public sector bank to migrate their corporate website to secure.bank.in in August. So it is your it is your Punjab National Bank that became the first bank to shift to this new domain. Next, mention the bank that launched the UPI services for non-resident external and non-resident ordinary account holders using international mobile number. It is mention that bank. It is AU Small Finance Bank. Next, identify the company that partnered with Thomas Cook India Limited to enable contactless cross-border payments via Google Pay, allowing users to make secure payments at merchant locations worldwide. It is MasterCard. Next, Power Finance Corporation Limited, that is PFC, they have signed a 150 million euro loan agreement with Germany's KfW in August to support India's power distribution under what? It is to support India's power distribution under revamped distribution sector scheme. Next is Japan International Cooperation Agency JICA. They have announced a $40 million investment in the Global Supply Chain Support Fund with an aim to boost small and medium enterprises that are engaged in the global supply chain across Asia and Africa. Next, mention the company that in August collaborated with Google Pay, a mobile payment application developed by Google to offer personal loans to the eligible users. It is your L&T Finance Limited. Next, mention the name of the gold loan product launched by South Indian Bank in August that is designed to offer quick and convenient access to credit for the customers. It is SIB Gold Express. Next, identify the bank which signed a memorandum of understanding with National Small Industries Corporation to enhance credit access for the MSMEs, aiming to enhance access to comprehensive financial and digital solution. Right? So identify that bank. It is your IndusInd Bank. Next, mention the insurance company that received 2 international certifications. These are the certification for Information Society Management System, and this one is for Business Community Management System. And which is that insurance company that received it? It is Universal Sompo General Insurance Company Limited. Next, students, is our homework section. First question, world's first malaria drug. World's first malaria drug for infants was launched by which country, and the name of the drug also. Second question, which country has adopted Euro recently and it became the 21st member of the Eurozone? Name that country. Third question, recently tell me what is the rank of NSE in terms of IPO fundraising globally? What is the rank of NSE globally? Fourth question, tell me recently who has been appointed as the executive director of COAI. What is this COAI? Give me the full form. And who has been appointed as the chairperson here, right? Or he has been reappointed as the chairperson here. I repeat. First tell me who has been appointed as the executive director of Federal Bank. I have mixed 2 questions. Executive director of Federal Bank. Then for fifth question, what is COAI? And who has been reappointed as the chairperson of COAI? This is your fifth question. So these are your homework questions, students. I need to see maximum participation from all the students watching this video.